charge to judgment, a journey of trial, a trial mechanism under BNSS. So before going to start trial proceedings, just I want to ask the student what is the first step to initiate the criminal proceedings? Any student can tell me what is the first step? Any student? Sorry? FIR, right? Okay. Any other? Okay. Any other student? So FIRs is the first step. Okay. Any other student? To complaint. If police officer refused to lodge an FIR, then we can file and complain. That is also the first step. Okay. Before that, what is required? Okay. Okay. Fine. Okay, let's start. Before lodging any FIR or like any complaint, that there is a first step that the committing of offense. There must be an offense under BNSS. BNSS on the basis of the criminal procedures. There are various categories of like offense, cognizable offense, non-cognizable offense, bailable offense, non-bailable offense, and compounding offense, non-compounding offense. That you already like studies that types of offense, right? So when the offense is committed, the first step that is to registration of FIR, as you already said, or if police officer refused to lodge an FIR, that the next step that is we have an complaint, right? So before lodging an FIR or a complaint, the persons who have committed the offense, that the person may be arrested, right? So arrest may be according to chapter number 5, section 35 to 62, right? So that stays may be overlapping. Sometimes क्या होता है कि offense commit होने के बाद immediately the person may be arrested and after that lodge an FIR, or uh, first lodge an FIR and after that the person is arrested, right? And the same if the police not registered an FIR or even arrest the offender, then we have an option that of to lodge an complaint, right? So these days that may be overlapping, right? After complaint the arrest may be done, and after FIR that arrest may be done, right? That may be an overlapping, right? So in all these, the first one common aspect, that is the bail, right? So even the arrested person has having like apprehensions that can apply for bail, and that bail is known as anticipatory bail, right? The secondly, and if if a person is arrested, then can file a bail, that is a regular bail, right? The regular bail that may be a claim as a matter of right or maybe an like discretionary bail, right? So these steps after committing an offense that may be a come. Okay, next after registration an offense, that the first step, that is investigations, like that is meaning that collection of evidence. So जो भी evidence relating to offense जो भी collect करेंगे police officers, that may be conducted under chapter number 13, to interrogate the accused, victim, witness, or maybe conduct a confession statement, right? Or maybe search and seizures, that all the part of investigations.
And after a conclusion of investigations, there is a next step, that is filing a charge sheet, right? That is also called challan, right? The challan basically is known as concluded, the conclusion of investigations, right? So जैसे ही पुलिस चालान प्रिपेयर करती है, the next step आता है हमारे पास chapter number 14, that is related to the address of the court, uh, that is jurisdiction of the court. Basically that the basic rules of like jurisdictions, in which areas the offenses committed that particular court have like jurisdictions. But there is some other rules under chapter number 14, that if there is uncertainty or like during journey, है ना, सो कहीं भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो किसी भी कोर्ट में क्या है, आप मतलब पुलिस कैन फाइल एन चार्ज शीट, राइट? सो जैसे ही कोर्ट मतलब उनको मिलता है पुलिस ऑफिसर्स को, then the court will take cognizance. Next chapter, chapter number 15, that is related to cognizance. Cognizance generally meaning that is to take in motions, right? So it, that particular offense have been committed in like particular jurisdictions. एंड नेक्स्ट स्टेप इज लाइक जैसे ही कोग्निजेंस लेता है, द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है दैट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. द चार्ज, द बेसिकली डिस्क्रिप्शंस ऑफ द offense, brief descriptions of the offense, give what offense actually the persons have committed, so that the persons can take appropriate or effective defense, right? So and after that the trial is begin, right? So these stages whatever we have discussed, that is a part of pre-trial stages, that all are called pre-trial stages, right? So uh, when trial began, that prosecution argument started, then defense argument started, then after that the conclusion of trial in form of judgment, that person may be a acquittal or convicted, right? So after judgment, the next is subsequent proceedings. The subsequent proceedings consisting like of like executions, execution of like judgment, like enforcement of judgment, the person put in jail, or जो भी penalty, जो penal imprisonment, जो भी sentence जो दी उसको execute करेंगे. Or the persons, those accused, if dissatisfied with the judgment, can file an appeal or may file an revisions. Like this is the like entire process of like a criminal trial uh, under BNSS, right? So these are the trial, that may be on pre-trial stages and after trial stages and during trial stages, right? So the our topic, that is from charge to uh, judgment, right? So trial proceedings. So trial generally not defined under BNSS, just simply meaning that is the trial is a proceedings which involve the examination of and determination of cause by magistrate or court, which ends the convictions or acquittal of the accused. The person may be an convicted of like any sentence, and or maybe an acquittal by the court, right? So proceedings here means that is judicial proceedings, which is defined under sections 2M. 2M, the proceedings where the evidence is taken on oath, right? So in a trial, this is trial is a, like a third stage, third like uh, फर्स्ट यदि हम कंप्लेंट की बात करें, द कंप्लेंट इज लॉस, देन सेकंड स्टेप इज लाइक इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी, इन इंक्वायरी आफ्टर दैट द ट्रायल may be start, or if it is registered on police report, then first registration of FIR, investigation, or the judge or magistrate may be conduct inquiry after submission of like occurrence report or closure report, right? And after that, trial may be start. So trial is a third stage. So trial under BNSS divided into two parts. That is
by Court of Sessions and by the Magistrate. By the Court of Sessions, Chapter 19 and sections 248 to 260, and by Magistrate, chapter number 20, 21, and 22. Right? So, accordingly, Court of Sessions under Chapter 19, sections 248 to 260, and trial of of warrant cases. Warrant cases further divided into two parts. The first one is the case instituted on police report. Police report मीन्स जहाँ पे एफ आई आर रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद चलान प्रेजेंट होता है, उसके बाद उसका अलग प्रोसीजर है वारंट केसेस, एंड द केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. So otherwise then on police report means the complaint cases, जहाँ सुओ मोटो केसेस होते हैं, उसके लिए क्या है, प्रोसीजर इज डिफरेंट. राइट? तो चैप्टर नंबर 20 है, दैट इज रिलेट टू द सेम sections 261 to 273, that is related to the warrant trial cases. Right? Next one is the trial of summon cases. Summon cases by the magistrate. Summon cases means petty cases like less than 2 years cases, generally considered as an summon cases. Chapter 21, sections 274 to 281 relate to the same. Last one is summary trials. Chapter number 22, sections 248 to 288. Right? So summary trial means any quickly disposal of the case, any summary disposal of the case. Right? Just only there is only fine, imprisonment, or less than 3 months imprisonment is there. Right? So now start the court of session trial. Right? So dear student, यदि आपको कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल समझ में आ गया, देन कोर्ट ऑफ वारंट केसेस ट्रायल, समन ट्रायल, सो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट आपने समझना व्हाट इज सेशन ट्रायल एंड व्हाट आर द स्टेप्स अंडर सेशन ट्रायल, व्हाट आर द स्टेजेस अंडर अ सेशन ट्रायल. ठीक है? सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना है इसको. ठीक है? जनरली क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन विल नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता. ठीक है? ये कोड लिखा है बाय मिस्टेक. सो आपने कॉग्निजेंस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ, तो उसमें लिखा हुआ था सेक्शन 213 में दैट कोर्ट ऑफ सेशन नेवर टेक कॉग्निजेंस unless and until provided by this संहिता. संहिता here means that is sections इसमें sections 222 where the case relate to the definitions of higher dignitaries like prime minister, president, vice president. Right? In these cases the court of session have exclusive power to take cognizance. Right? But अब कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली तो नहीं ले सकता, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है? हमें पता है कि भी जो कॉग्निजेंस है दैट इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट. राइट? अंडर सेक्शंस 210. ठीक है? कोई भी जो क्रिमिनल केस होता है पहले मजिस्ट्रेट के पास जाता है. राइट? एंड मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शंस 232, इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन उसको क्या करता है, कॉमिटल करता है. Right? So there are some 3 stages if you have learned during the cognizance chapter. There is first one is submission proceedings, the second one is makeover proceedings, the third one is the committal proceedings. Committal proceedings hoti hai lower to upper court, transfer of the lower to upper court, magistrate court है, सीजीएम है, उसको लगता है दैट केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, तो उसको अंडर सेक्शन 232 क्या करेगा, कॉमिट कर देगा सारे की सारी प्रोसीडिंग्स कोर्ट ऑफ सेशंस, और कोर्ट ऑफ सेशन फिर उसका ट्रायल इनिशिएट करता है. यदि उसको लगता है कि दैट केस इज ट्राइबल बाय द सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, है ना, तो वो क्या करता है, उसको मेक ओवर करता है. राइट? मेक ओवर मीन्स अपर टू लोअर, है ना. तो सीजीएम क्या करेगा, उसको लोअर कोर्ट को क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स को मेक ओवर करेगा. राइट? एक आता है सबमिशन करना, है ना. सबमिशन होता है इक्वलेंट रैंक को, है ना. सीजीएम है द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जनरली होते हैं, तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को यदि पावर है उस केस की ट्राई करने की, तो उसको किसी दूसरे कोर्ट को सबमिट कर देगा. दैट कोर्ट हैव एन पावर टू ट्राई दैट केस. ठीक है? सो द कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली विल नॉट टेक
not initiate the proceedings unless and until provided by this संहिता, like sections 260 में अलग से provisions है जहाँ पे direct cognizance के बारे में बात की है. Generally एक ही section हमारा sections 222, like if the case relating to defamation of higher dignity of like prime minister, president, vice president, or any other dignitaries, right? So stages, very importantly, first stage है हमारी, that is conduct of the prosecution. Who will conduct the trial? The first step, right? Second step आता है हमारा, that is the commencement of trial, right? Who will conduct and when it may commence, कब commence होगा. The third stage आती है हमारी, that is discharge. That is very very important. If there is no sufficient reasons, then the court may discharge the accused, right? So if there is an evidence, then framing the charge, right? Charge is what offense actually have been committed by the accused, right? Then the fifth ones, after framing the charge, the judge will ask from the accused whether you are plead guilt or not. If the person's plead guilt, yes, I have committed, then conviction on that plea, right? यदि वो एक्सेप्ट करता है कि यस मैंने ऑफेंस किए है, तो वो क्या करेगा, उसको कन्विक्शन करेगा वहीं पे, ठीक है. और इफ नॉट प्ली गिल्टी और नॉट कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, देन एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एक डेट देंगे कि भाई इस डेट पे प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस प्रेजेंट करेगा. So after conclusion of prosecution evidence, then next step is the acquittal. ठीक है. यदि द प्रोसिक्यूशन अपना केस ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, कोई केस ही एविडेंस ही प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाया, देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्विटल. द कोर्ट ऑफ सेशन में एक्विट द एक्यूज. Or if the case is fitable or the evidence is there, then examination of accused or evidence for defense. उसको डिफेंस के लिए जितने भी विटनेसेस हैं सबको कॉल करेंगे. Now after that, final arguments, right? Stage number 10 and 11, the judgment or sentence hearing. Judgment and sentence hearing both are the different. Judgment in form of acquittal or convictions, right? उसमें सिर्फ ये बताएंगे person is convicted or acquittal. And after that, next hearings for sentence hearing. Sentence hearing generally दोनों parties अपने advantage की बात करती हैं. Advantage here means that is like if you have heard about the case of the Ram Rahim, Asaram Bapu, right? So इन दोनों ने क्या plea raise की थी कि that we have done a lot of social work कि हमारी sentence कम हो जाए, है ना. So वो अपनी प्ली रखते हैं सेंटेंस शीटिंग में, राइट, कि मिनिमम से मिनिमम सेंटेंस दी जाए, राइट. ओके, लास्ट आती है हमारी द प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड. इफ द पर्सन इज ऑलरेडी कन्विक्टेड, दैट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट दैट plea also taken under during the sentence hearing. These are the 12 steps for 12 stages for the court of session trial. एक एक करके अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब ये 12 स्टेजेस हैं जिसको समझ में यानी ब्रीफिंग में मैंने बता दी है, ये ओवरलैपिंग नहीं होंगी, ध्यान रखना है कभी भी. और यदि जिसको ये 12 स्टेजेस समझ में आएगी उसको कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ट्रायल भी समझ में आ जाएगा. लास्ट में हम एक कंपैरिजन टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें आप कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, warrant trial instituted on police report and other than police report, and next is summon cases. तीनों में कंपैरिजन करेंगे. यदि आपको ये स्टेज समझ में आ गई तो आपको वो भी आपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो लैंग्वेज डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट स्टेजेस की मिसिंग है. लाइक जैसे ये एक्विटल स्टेज है, वारंट केसेस में नहीं है, है ना. तो ऐसे कुछ स्टेज मिसिंग है, कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं बता दूंगा साथ के साथ में. बट ये 12 जो स्टेजेस हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ये आप सबको पता होने चाहिए. फॉर एवरी क्रिमिनल ट्रायल्स दीज आर 12 स्टेप्स, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए. So start with the first step, that is the conduct of the prosecutions. As you know that the Casos Court of Session trial is conducted by the public prosecutors. Can anyone tell me why it is called public prosecutors? कोई बता सकता है कि पब्लिक क्यों बोलते हैं इसको? कोई भी बच्चा?
यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है ना। He is appointed by the government and paid from the public money. गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट इज आल्सो इन्वॉल्व, पब्लिक इंटरेस्ट इज आल्सो इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, राइट? सो समटाइम दैट द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बाय लाइक इंटरव्यू पैनलिस्ट, है ना। तो काफ़ी बार ये जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होगे तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, if you are preparing for like any like law officers, yeah, public prosecutor, assistant public prosecutor, लिटिगेशंस में यदि आपने जाना है तो दैट स्टेप्स मस्ट बी, मतलब आपको पढ़ने चाहिए। और ये स्टेप्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में से क्या है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। बिकॉज यदि जुडिशरी का आपको इंटरव्यू देना है तो उसके लिए कुछ अलग स्टेप्स हैं, लाइक जिसमें हाउ लाइक चार्ज टू बी फ्रेम, है ना, कैसे फ्रेम्स होते हैं, ज्वाइंट ऑफ चार्ज कैसे होता है, ज्वाइंटर ऑफ एक्यूज कैसे होता है ना, एरर ऑफ चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, वो कॉग्निजेंस कब लेते हैं, इलीगलिटी ऑफ अरेस्ट कैसे चेक करेंगे, है ना, वो जुडिशरी पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बट फॉर द लाइक लिटिगेशन पार्ट, लाइक फॉर द प्रोसिक्यूशन साइड, तो हमें ट्रायल की स्टेजेस का हर एक का पता होना चाहिए, ठीक है। सो एवरी ट्रायल जो बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन दैट इज कंडक्टेड बाय public prosecutor, right? Secondly, the commencement of the trial. कब commence होगा? When it may be commenced? When the accused appear. Appear here means that is surrender करना, or is brought before the court in pursuance of the commitment of the case under section 232, यानी committal of the proceedings। देखो यहाँ पे लिख दिए, या तो surrender कर रहा है या केस जो है commit किया by the magistrate, ना। The public prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused, कि भी ये ऑफेंस के चार्ज है जो पुलिस ने जो अपनी चार्ज शीट में फ्रेम किए हैं, ठीक है। And also stating the evidence, what evidence actually he has like proposed to be proved for the guiltiness of the accused, right? So next आता है हमारा, जैसे ही वो एविडेंस प्रोड्यूस करे, yes, is there any question? Okay. Uh, नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज डिस्चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, और काफ़ी बारी मतलब लाइट में आती है। सो इफ देर इज नो एविडेंस, if there is no sufficient evidence against the accused proved by like public prosecutor, then the judge or judge may discharge the accused, ठीक है। सफिशिएंट एविडेंस ऑन फर्स्ट हियरिंग, जैसे जो चार्ज फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेमिंग से पहले क्या है, एक हियरिंग कंडक्ट होती है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। उससे पहले एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं, और एविडेंस क्या है, इफ देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, देन द कोर्ट में डिस्चार्ज द एक्यूज। यदि एविडेंस ही अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए या सफिशिएंट एविडेंस नहीं है टू प्रूव द गिल्टीनेस ऑफ द एक्यूज, है ना, ऑन द प्राइम फेसाई, ठीक है, इन दैट केस द कोर्ट डिस्चार्ज द एक्यूज। अब ये ध्यान रखना है, चार्ज फ्रेम होने से पहले की स्टेज है डिस्चार्ज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट। डिस्चार्ज मे बी जस्ट स्टेज बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। यदि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, इफ देयर इज इनसफिशिएंट ग्राउंड, देन क्या है, वो चार्ज फ्रेम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या है, चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, अदरवाइज क्या है, उसको डिस्चार्ज कर देंगे वहां पे, ठीक है। अब इसमें जो सेक्शन 250 है, इसमें कभी जो बीएनएसएस में थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं, वो है दैट एक्यूज मे प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस। अब इसमें क्या है, पहले ये एक्यूज का एक और राइट रिकॉग्नाइज किया है यहाँ पे, कि भाई विद इन 60 डेज यदि एक्यूज को भी लगता है इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन, नो सफिशिएंट ग्राउंड, दे कैन फाइल अ डिस्चार्ज एप्लीकेशंस, right? So upon the consideration of like applications or the document, है ना,
उसके बाद आफ्टर हियरिंग द सबमिशंस, है ना, द जज को लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, देन ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर द डूइंग। आपने देखा होगा कन्हैया कुमार का केस, जो जेएनयू में रॉयट हुए थे, राइट? तो उसमें कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया था, इफ यू हर्ड अबाउट दैट केस लॉ। ठीक है, जेएनयू में जो रॉयट हुए थे, कन्हैया कुमार जो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट में है, वो मतलब एक स्पोक पर्सन है, ठीक है। और उन्होंने जो वर्डिंग्स, जो वट एवर अगेंस्ट इंडिया जो उन्होंने बोला था, दैट इज ऑल लाइक ऑन द फेस ऑफ लग रहा था कि भी दैट इज ट्रू, बट आफ्टर फोरेंसिक लैब रिपोर्ट, ठीक है, तो वो फेक डिक्लेयर हुई। एंड उसी के बाद कोर्ट ने क्या किया, उसको डिस्चार्ज किया था, बिकॉज देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस। एंड आफ्टर दैट पुलिस ने री इन्वेस्टिगेशन किया उसको, केस को, और चार्जशीट फाइनल की। चार्जशीट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को रेफर की, और यदि उनके अगेंस्ट केस बना तो उनको फर्दर आगे प्रोसीडिंग्स के लिए इनिशिएट किया। चार्ज के बाद क्या है, डिस्चार्ज के बाद, डिस्चार्ज के बाद कैन पुलिस कैन री इन्वेस्टिगेट, दोबारा उसको न्यू एविडेंस फाइंड आउट कर सकती है, ठीक है, और दोबारा उसको उसके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड कर सकती है, ठीक है। ओके, जो चेंजेस जो लेके आए इसमें बीएनएसएस में, वो थे हमारे 60 डेज का टाइम लाइन जो है इसमें फिक्स की गई थी, राइट। देयर इज एन केस, बड़ा ही फेमस केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ला कुमार, right? The Supreme Court in this case observed that not sufficient ground for the proceedings against the accused clearly show that the judge is not a mere post office to frame the charge at the order of the prosecutions, right? जो भी आपने एलिगेशंस लगाए हैं चार्जशीट में, ये नहीं है कि जज जस्ट उनको देख के इमीडिएटली क्या है अपना माइंड अप्लाई करेगा, राइट। उसको देख के एज इट इज क्या है ऑर्डर पास कर देगा कि ये चार्ज फ्रेम, नो, जस्ट अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड टू चेक द फैक्ट, राइट। तो फैक्ट चेक करेगा और उसके बाद ही क्या है अपना लॉजिकली अप्लाई करके उसको चार्ज फ्रेम करेगा, और यदि नहीं है चार्ज फ्रेम नहीं, नो देयर इज नो सफिशिएंट रीजन, उसको डिस्चार्ज करेगा, राइट। सो दिस इज द लाइक मेन केस ऑन द सेम, राइट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इफ द एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 250, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दैट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। सो आफ्टर कंसिडरिंग और हियरिंग एज मेंशन्ड इन सेक्शन 250, ठीक है, इट जस्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, right, and that is exclusively triable by the court, then charge the fix the charge, right? और if it is not exclusively triable by the court, कई बार ऐसे लगता है कि फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद चार्ज मतलब केस जो एविडेंस है वो प्रूव नहीं हो रहे हैं, या कोई पेटी केस बन रहा है, इन दैट केस क्या है, कोर्ट उसको रिमांड कर देगा। उस केस को रिमांड किसको करेगा, सीजीएम को, है ना, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को, एज द केस में भी जो भी हो, ठीक है। और इफ इट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन ही शैल फ्रेम द चार्ज इन राइटिंग विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो 60 डेज में क्या है वो चार्ज फ्रेम करेगा। अब आप इससे पहले क्या था, देयर इज नो टाइम लाइन, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो क्या है चार्ज फ्रेमिंग के लिए क्या है ये टाइम लाइन फिक्स की गई है, दैट इज 60 डेज, है ना। सो प्रोसिक्यूशंस कैन लाइक क्वेसिंग के लिए चार्ज को क्या है हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं आजकल, है ना। तो जनरली क्या होता है, ये चार्ज फ्रेमिंग की जो स्टेज है ये बड़ी एक लंबी चलती है, और इसमें जनरली बहुत लंबा टाइम ले लेते थे पहले जजेस, ठीक है। तो आप इसको फिक्स कर दिया है विद इन 60 days फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, राइट। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट दैट जैसे वो चार्ज फ्रेम करेगा, दैट ही शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, ठीक है, आइदर फिजिकली और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना। दैट इज मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ जज, कि भी उसको बताएगा कौन कौन से चार्जेस फ्रेम किए हैं और कौन से उसको उसकी लैंग्वेज में बताएगा। इफ देर इज मतलब वो नहीं बता रहे हैं, इफ देर इज इरेगुलरिटीज, ठीक है, सो अंडर सेक्शंस 510,
5110, right? Under that sections, the court may direct for a new trial, राइट. दिस इज द लाइक मेन स्टेज. यहाँ उसकी ड्यूटी बनती है, एक्यूज को बताएगा कि भाई आइदर यदि वो फिजिकली अवेलेबल है तो उसको उसकी लैंग्वेज में उसको रीड आउट करेगा, एंड और मे बी अन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे जो जेल में होते हैं एक्यूज, है ना, थ्रू वीसी वो उसको एक्सप्लेन करेगा, राइट. एंड आफ्टर दैट वो क्या है, द जज विल आस्क, mandatory judge shall ask that whether he plead guilt of the offense or not, or claim to be a charge trial, right. That is the most important. उससे पूछता है उसी टाइम पे कि भाई आप एक्सेप्ट करते हो जो चार्ज मैंने फ्रेम किए, आर यू एक्सेप्टिंग द गिल्ट और नॉट, और प्लीड गिल्ट, ठीक है. तो ऑप्शन ऑन, लाइक accused that may accept the guilt or may claim to try it, right. काफी बारी, it's my personal experience on this part, that sometimes accused want to plea accept कि भी yes मैंने offense की है, but जहाँ एडवोकेट होता है उसको एडवोकेट उसको कहता है कि नहीं, हम आगे प्रोसीड करेंगे, है ना, और हम इसमें विनर होंगे और आपको मतलब एक्विटल डिक्लेयर कराएंगे, just because of like to sake of like some money, just enough, right. Okay. uh, can you answer these questions, anyone? Where assassin just frame a charge against the accused but subsequently discharge him, then what would be the consequences? That would be legal or illegal? yes बेटा, कोई बताएगा? जज ने चार्ज फ्रेम किए और बाद में उसको डिस्चार्ज किया, then what would be the consequences of this judgment or order? कोई बताएगा? Judge need to record the reasons. हाँ जी. If the judge is discharging the accused, he has to mention the reasons. थिंक आवाज नहीं आ रही उधर इस तक, है ना. जस्ट ये बता दो कि इट इज वैलिड और नॉट, इज इट वैलिड? क्या बैक गियर लग सकता है? बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे इफ यू सर्च ऑन गूगल कि भी चार्ज फ्रेम होने के बाद में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो बैक गियर लगता है. इज इट परमिशेबल? नो, दैट इज नॉट परमिशेबल. डिस्चार्ज की जो स्टेज है वो सेक्शन 250 में है. इफ देर इज नो एविडेंस देन डिस्चार्ज है, ठीक है. इफ देर इज एन एविडेंस देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दैट इज क्या आएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा प्रोसिक्यूशन हियरिंग. प्रोसिक्यूशन यदि केस एस्टेब्लिश नहीं करेगा उसके बाद एक्विटल आएगा, है ना. सो दिस गेयर इज लाइक इनवैलिड और लाइक illegal, ठीक है. द कलकत्ता हाई कोर्ट इन दिस केस दैट इज डिक्लेयर दैट इज इलीगल एंड सेट द डिस्चार्ज aside, right. So under जो ये हमने डिस्कस किया 250 250 के बाद 251, पहले डिस्चार्ज आएगा फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले बैक गियर नहीं लग सकता है, मींस डिस्चार्ज नहीं हो सकता, राइट. सो दैट वुड बी इलीगल, राइट. सो 250 के बाद 251 फर्स्ट डिस्चार्ज, यदि डिस्चार्ज नहीं हो रहा है देन इफ देयर इज एन एविडेंस देन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, राइट. और जो चेंजेस आए जो हमारे बीएनएसएस में, जो एक तो टाइमलाइन फिक्स की गई 60 डेज की टाइमलाइन, एंड द सेकंड वन इज जो रीड एंड एक्सप्लेन द चार्ज आइदर फिजिकल मोड और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. पहले क्या था, फिजिकल मोड इज मैंडेटरी, बट अब इन्होंने थ्रू वीसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी क्या है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट.
सो ये इम्पोर्टेंट जो चेंज आया बीएनएसएस में, पहले जो था सीआरपीसी में ये टाइमलाइन और ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नहीं था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट द कन्विक्शन ऑन प्ली, राइट। सो इफ एक्यूज प्ली गिल्ट एक्सेप्ट करता है, देन जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे मे डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, ठीक है, कन्विक्ट हिम देयर ऑन। यदि लगता है कि भी ये ड्यू टू प्रेशर्स या ड्यू टू लाइक एनी इन्फ्लुएंस ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वॉलंटरीनेस चेक करने की ड्यूटी जज की है। चेक करेगा कि भी ये कहीं इन्फ्लुएंस में नहीं, कोई प्रॉमिस तो नहीं किया गया है इसको, कोई प्रेशर तो नहीं है ना। तो वो चेक करने की ड्यूटी किसकी है, जज की है। और उसके बाद यदि लगता है एक्सेप्टेंस जो भी कर रहा है, जो प्ली ऑफ एक्सेप्टेंस विदाउट फियर, विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट प्रेशर है, was not plead. I am audible. Yes, sir. Now you are audible. Okay. Sorry. Sections 253, that is related to evidence for prosecutions. If the accused refuse to plead like कि accept नहीं करना, ठीक है, और कि भी I have committed these types of offense or claim to be tried, ठीक है, and or is not convicted under sections 252, then the judge क्या करेगा, उसको date for examination of witness। इसके बाद डेट फॉर एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशंस, उनके एविडेंसेस कलेक्शंस जो भी होगा वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करें, क्रॉस एग्जामिनेशंस, मतलब चीफ एग्जामिनेशंस है ना, वो यहाँ पे होंगे। इसके बाद for I'm audible. Okay, so final arguments, final both the Something. Yeah. okay. So final arguments means from prosecution side and defense side will take like sum up of the case and plea for like prayer, right? Last इसमें like 10
जो पॉइंट हमारा स्टेज नंबर 10, दैट इज जजमेंट. जजमेंट, जजमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्विटल और इन फॉर्म ऑफ कन्विक्शंस, है ना. आफ्टर हियरिंग बोथ द आर्ग्यूमेंट्स, दोनों की फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद, लाइक एंड लॉ पॉइंट्स, यदि कोई लॉ पॉइंट अराइज होता है, लाइक जैसे the prosecutions या defense can raise the plea that there is let's say if the case against the public servant, that you have not take like proper sanctions from the government, and how you can convict the and how you can try this case. So that part, after hearing that all law points, okay, then just give the judgment in that case. दैट द टाइम पीरियड जो अभी इन्होंने मेंशन किया है, पहले हमारा जजमेंट वाले पोर्शन में था, बट अब इन्होंने यहीं पे मेंशन कर दिया, दैट इज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, और विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 45 days फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइट. नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंटेंस हियरिंग के बारे में बात करते हैं, है ना. जैसे जजमेंट में कन्विक्शंस के बारे में कन्विक्शन आती है, तो कन्विक्शन के बाद नेक्स्ट डेट फॉर सेंटेंस हियरिंग. सेंटेंस हियरिंग में दोनों पार्टीज अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखती हैं. बेनिफिट्स लेने की बात करती है. बेनिफिट हियर मींस दैट इज लाइक सेक्शन 401, दैट इज रिलेट टू probation or admonitions, right? If the person is like a first timer offender, or like uh, person have committed petty offenses, that can claim the that I have I have committed first time this offense, and give the chance for rehabilitate, है ना. So उसके लिए admonition और probation का जो concept है, that can be raised, राइट. दैट प्ली कैन बी रेज. और प्रोसिक्यूशंस क्या रेज का और भी कर सकता है कि भी जैसे जो मैंने आपको आसाराम और राम रहीम का केस डिस्कस किया, इनमें जो वो सोशल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे कि वी हैव कंडक्टेड हंड्रेड्स ऑफ लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, और इतनी मैरिज कराई, इतने स्कूल चला रहे हैं, है ना. और यदि हमें कन्विक्ट कर दिया तो दैट वुड बी लाइक इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना. स्कूल की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा कि भी लीनियंट वे से एक सेंटेंस दिया ना, तो वो प्ली दैट कैन बी रेज ड्यूरिंग द सेंटेंस हियरिंग, राइट. सो इसके बाद प्रीवियस कन्विक्शंस के बारे में बात करते हैं. प्रीवियस कन्विक्शंस यदि कोई है तो उसकी जस्ट एंड रेफरेंस देना है कि सो एंड सो केस में क्या है, इनको कन्विक्शन है फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट, राइट. सो ये हमारा सारे के सारे जो स्टेप्स थे कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल थे, ठीक है. कोर्ट ऑफ सेशन की सारे स्टेजेस थी, जो 11 स्टेजेस और 12 स्टेजेस जो थी, ठीक है. इसके बाद एक हमारा ना सेक्शंस ये है सेक्शंस 260, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ बात की थी, जहां कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कोग्निजेंस लेता है, ठीक है. उस केस में क्या है वो, जहां डायरेक्ट कोग्निजेंस लेता है, दैट कोर्ट ऑफ सेशन विल proceed according to the warrant case the instituted other than the police report. Means जो complaint case का जो procedure that would be followed by the court of session, ठीक है. उसका क्या procedure है वो अभी हम एक बार discuss करेंगे. Just a minute. Okay. Okay, screen is visible, ma'am. Sir. More than Yes, sir. Yes. Okay. Yes. So this is the like comparative paper. Comparison. Yes, it is visible, sir. Okay. So whatever we have like discuss and like stages of like a court of session trial, these are the stages. Like very first जो हमने discuss की थी, that is conduct of the prosecutions. Sections इसमें कोर्ट ऑफ सेशन में सेक्शन 248 है. एंड इधर जो हम बात करें वारंट केसेस मैंने फर्दर आपको बताया था. देयर इज इन टू टाइप्स ऑफ वारंट केसेस. द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट हियर मींस थ्रू एफआईआर, और द अदर देन पुलिस रिपोर्ट मींस यानी कंप्लेंट केस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट.
और एक आता है हमारा सम्मन केसेस जो चैप्टर नंबर 21 में। देखो फर्स्ट है, फर्स्ट द कंडक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशंस। कोर्ट ऑफ सेशन में क्या है, दैट इज कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना, अंडर सेक्शन 248। और इधर यदि हम बात करें 261 में ही है हमारा, दैट इज कंडक्टेड बाय असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट पे रजिस्टर्ड होते हैं वो वारंट केसेस हैं, वो बाय द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, एंड यदि वारंट जो कंप्लेंट केस होते हैं वो होता है बाय कंसर्न पर्सन। क्यों? बिकॉज जो कंप्लेंट होती है प्राइवेट इन नेचर होती है, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट एडवोकेट हायर करते हैं और उसको क्या है वो केस को प्रेजेंट करता है। एंड द सम्मन केस आल्सो द सेम केस, दैट इज कैन बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न पर्सन। ठीक है, तो स्टेजेस का स्टेजेस में फर्स्ट में याद रखना आपने 248 में क्या है, जो हमारा कंडक्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन है वो यदि कोर्ट ऑफ सेशन है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यदि वो वारंट केसेस है इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस रिपोर्ट दैट इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और यदि वो कंप्लेंट केस है दैट इज कंडक्टेड बाय द कंसर्न पर्सन, मींस प्राइवेट जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल सेक्शन 249 में है हमारा कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, कब कमेंस होगा, कैसे होगा। और 261 में क्या है, वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। एंड 267 में है द सेम वर्डिंग, देयर इज नो चेंज, वर्डिंग सेम रहेगी। ठीक है, और 274 में द सम्मन केसेस में है, राइट। एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज स्टेजेस क्या है, अब पहले क्या था, सम्मन केसेस में नहीं थी डिस्चार्ज, अब क्या है, तू एक नया प्रोविजन ऐड ऑन किया है, तो उसमें भी डिस्चार्ज का ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, सो 250, 262, 268 एंड 274, जस्ट एंड सेक्शंस डिफरेंस, लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपने सेक्शन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग सेक्शन 251, 263 में क्या है, वारंट केसेस में है, और अदर देन पुलिस रिपोर्ट में क्या है, 269 का सबसेक्शन 1 में, एंड 274 में क्या चार्ज इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम्मन केसेस में क्या होता है, सम्मन केसेस में चार्ज फ्रेमिंग दैट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी वर्ड है, बट क्या है, यदि जज चाहे तो कर भी सकता है, बट नेसेसरी नहीं है सम्मन केसेस में, राइट। ओके, नेक्स्ट है प्ली ऑन कन्विक्शंस, पूछा जाता है कि वेदर यू आर प्ली गिल्ट और नॉट। ठीक है, वो सेम 250 कोर्ट ऑफ सेशन में भी है, और वारंट केसेस में भी है, और हमारा सम्मन केसेस में भी एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है एविडेंस प्रोसिक्यूशंस, वो हमारा एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशंस ही हमारा 253, 254 एविडेंस सेम हमारा वारंट केसेस में, एंड सेम विद लाइक वारंट केसेस एंड सम्मन केसेस में भी सेम ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा एक्विटल। एक्विटल जो स्टेज है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में है। एक्विटल स्टेज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 7 स्टेज है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में है, right? And that is missing under warrant cases instituted on police report, other than police report और summon cases। तीनों में किसी में भी क्या है, एक्विटल की स्टेज नहीं है। जैसे ही एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन के बाद, प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन के बाद इमीडिएटली क्या है, डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, यानी एक्यूज का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, वो तीनों में कैसे एग्जामिनेशन होगा, ऑन ओथ होगा, कैसे होगा, वो सारा सेक्शन 351 में है। 351 कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज का प्रोसीजर वहां पे गिवन है। एविडेंस अपॉन डिफेंस, डिफेंस कब लेगा, 256 इन लाइक कोर्ट ऑफ सेशंस, द सेम सेक्शंस 266, 270 एंड 277 इन लाइक समन केसेस। लाइक फाइनल आर्गुमेंट्स दोनों में सेम है। ठीक है, वारंट केसेस में और समन केसेस में भी। जजमेंट, जजमेंट भी दोनों में सेम है, कॉमन कॉमन लाइक वारंट केसेस एंड समन केसेस, एंड द सेम समन केसेस में भी ऐसा ही है। और सेंटेंस हियरिंग, सेंटेंस हियरिंग भी मतलब कॉमन सब में है। सो 12 स्टेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये 12 स्टेजेस यदि आपको आगे सिर्फ सेक्शन नंबर डिफरेंस देखना है, अदरवाइज जो वर्ड लैंग्वेज जो है सबकी कॉमन है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप ये 12 स्टेजेस हैं, आपको पता होने चाहिए। बैक गियर नहीं लगेगा इसमें, है ना, पीछे नहीं जाना है, कोई भी स्टेज ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट, स्टेप टू स्टेप्स होंगे। ठीक है, सो इसलिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस ये है हमारा कि फर्स्ट कंडक्ट होगा, फिर कमेंसमेंट, डिस्चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग, कन्विक्शंस, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशंस, फिर डिफेंस, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स, और फिर जजमेंट, और फिर सेंटेंस हियरिंग।
ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय साइड विद इन ड्यू टाइम जो मुझे लॉट किया था, सो आई हैव कंप्लीटेड दैट टास्क. नाउ ओवर टू द पार्टिसिपेंट. यदि आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग. यस स्टूडेंट, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी. Students, if you have any questions, please raise. This is an opportunity. Sir, will you give two examples related to this trial? Examples. रवि सर, कैन यू एक्सप्लेन मी कि बच्चे क्या पूछ रहे हैं. Yes, please. You're not audible properly. The student who has asked the question, please, can you repeat it, please? Sir, will you give few examples? On what? Trial case. Session trial, summons trial, and warrant trial. Example of all these three trials, four trials. कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल एंड समन ट्रायल, इस पे एग्जांपल्स पूछ रहे हो. जी. समन केसेस पता है आपको? समन केसेस, व्हाट डू यू मीन बाय समन केसेस? पैटी केसेस होते हैं जनरली, जो हम जिसमें लेस देन 2 ईयर जितनी भी जो इम्प्रिजनमेंट होती है, उनको हम समन केसेस जनरली हम ट्रीट करते हैं, है ना. उनके लिए अलग से प्रोसीजर गिवन है कि भी यदि इनमें जनरली जो हम हमारा जो इसमें व्यू रहता है कि भी इसको एक लेंथियस जो प्रोसेस है, जो हमने 12 स्टेजेस जो की है अभी, राइट. तो कि भी जो विक्टिम है या एक्यूज है वो सफर ना करे, है ना. क्योंकि देखो 12 स्टेजेस हैं. 12 स्टेजेस आपने देखा होगा कि भी ट्रायल तो स्टार्ट होता ही नहीं, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, 3-3 4-4 साल लग जाते हैं. और यदि यही हाल हम समन केसेस के लिए करेंगे, है ना, तो एक इट विल टेक टाइम, लॉन्ग टाइम, है ना. वो तो फिर इनजस्टिस ही हो जाएगा, है ना. तो इनका जो बाइफरफिकेट किया गया है ना, इनकी डेफिनेशन जो दी गई है ना, समन केसेस मींस विच इज नॉट लाइक ए वारंट ट्रायल, है ना. वारंट ट्रायल कौन से होते हैं? अबाउट देन 2 इयर्स, जिसमें कन्विक्शंस है ना, पनिशमेंट इज देयर, दैट इज कंसिडर एज एन वारंट ट्रायल, राइट. जो सीरियस इन नेचर में कंसिडर होते हैं उनके लिए अलग से है. उसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक तो होता है पुलिस रिपोर्ट, जिसमें हम डायरेक्टली जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर कराते हैं. और आपने पढ़ा भी होगा बीएनएसएस में कि भी यदि रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शंस फॉर लाइक टू लॉज एन एफआईआर, सॉरी, कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट. उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, ठीक है. और आपका शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ लाइक फर्स्ट शेड्यूल है जो आपका, आप बेयर एक्ट में आप चेक करोगे लास्ट में, तो वहाँ पे हर एक ऑफेंस के बारे में लिखा है दैट व्हाट कोर्ट हैव पावर टू ट्राई दैट केस. रवि सर, और कोई क्वेश्चन है? Is there any other questions from students? Yes. Otherwise, we'll close the session. Thank you. Yes. Any questions? ओके, आई Yes. थिंक With the permission of यह तो कंप्लीटली, principal, can we close the session if there are no other questions? So I presume that there are no other questions. So at the conclusion of the session, it is my duty to express my gratitude to all those who have made this event a very successful event. First of all, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Sonu Saini sir for delivering such an insightful and enlightening and intellectually stimulating lecture. Sir, your deep research and
practical understanding have greatly enriched our knowledge today. Thank you, sir, for your precious time for the benefit of our students. Secondly, my sincere thanks to our principal, Madam Dr. P.P. Nathani, for arranging such an important session with such an important resource person, which was truly enriching. Thank you very much, madam. And students, for patients hearing, which is very beneficial. This session was very beneficial as far as trial procedure is concerned, and is going to help you in while you write the examination, university examination. Thank you very much for being present in large numbers. And at the same time, I would like also express my gratitude to the technical people who made this session possible. Thank you very much. Thank you very much, sir, Saini sir, for giving us Okay, precious जी. time. ठीक है जी. Thank you so much. Thank you जी. With Thank your you kind Pritam ma'am permission, for yes, yes sir. with your kind, with your kind permission, sir, we will conclude this session. Thank you very much, and Yes. we would like to see you again, sir, sometime in future, whenever it's Okay, possible. okay, sir. Fine. Thank you. Okay. Thank you, Right. sir. Thank you. Thank you.